everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansaar. I am CA Bhawna and we are going to start a series on IFRS. So our today's topic is overview of IFRS and IAS1. Let's start. जैसे हम सबके कुछ रूल्स होते हैं, हम सबकी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के कुछ रूल होते हैं, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के कुछ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर होते हैं जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं. नाउ यू ऑल आर अवेयर कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, यहां तक कि कोरोना भी ग्लोबलाइज है. एक कंट्री में क्या आया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल गया. सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इंटरनेशनल करना पड़ा. नाउ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल प्रोसीजर्स, like all principles and the procedures on which financial statements are presented by the companies. अब इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है? एज अ स्टेक होल्डर मुझे दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है. सो आई नीड दैट देयर शुड बी सम सेम प्रिंसिपल्स, there should be some same consistency, the transparency in the financial statements should be there. So उस comparability के लिए कुछ principles हैं जिसके बेसिस पे listed companies को अपने financial statements accordingly IAS बनाने पड़ते हैं. What happened? Like it's the first time when International Accounting Standard Committee आई, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया, कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स दिए जिसके बेसिस पर इंटरनेशनली कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी. अब इन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी. किसी चीज की इंटरप्रिटेशन हमें और चाहिए थी और एनालिसिस चाहिए था. उसके लिए सिक आया. सिक इज व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन कमेटी, जिसने कुछ वेग चीजों को ज्यादा क्लियर किया, कुछ ज्यादा इंटरप्रिटेशंस दी. ओके, अब कोरोना तो है, उसका अपडेटेड वर्जन आए ही जा रहा है, डेल्टा प्लस एंड ब्ला ब्ला. ऐसे ही IAS का अपडेटेड वर्जन आया, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. जिस IFRS को अभी तक डिफाइन नहीं किया, जिसके ऊपर, जिस आइटम के ऊपर अभी तक कोई IFRS कुछ नहीं बोलता, वो IAS से ही ऑप्ट कर लिए, सिक की इंटरप्रिटेशंस को ऑप्ट कर लिया. अब एक कमेटी बनी, कमेटी पहले थी, अब एक बोर्ड बना, IASB. पहले कमेटी थी, अब बोर्ड बना. कमेटी ने IAS दिए, इस बोर्ड ने IFRS दिए. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने IFRS दिए, लेकिन जिस IFRS के ऊपर इस बोर्ड ने कुछ नहीं कहा, उसको कमेटी के IAS को ऑप्ट कर लिया. सो कैन आई से कि IFRS इज इक्वलेंट टू IFRS. व्हाट डू यू मीन बाय IFRS? सो IFRS आर IAS प्लस जो IFRS खुद इश्यू है, सिक की इंटरप्रिटेशन plus IFRIC interpretation. Now what is this IFRIC interpretation? Again IFRS में कुछ vague informations, जैसे कि SIC interpretations IAS के लिए थी, वैसे ही IFRIC interpretations हमारी IFRS के लिए आई. Okay, just a very general view. पहले IAS था, कमेटी थी जिसने SIC interpretation दी. But now it's get old. We need some updated version. IFRS आया, जो कि बोर्ड ने दिया, कुछ IFRIC interpretations दी, जिसके बारे में, जिस आइटम के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, वो IAS+SIC से ऑप्ट कर लिया गया. Now the upcoming version of, oh my God, Corona, leave it. But we are like we are expecting the new version of IFRS X in 2023. I can give you one example, like what is proposed in IFRS X. अभी हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? It is prepared in a view of P&L, comprehensive income and total comprehensive income. But IFRS X में it is proposed that financial statements में जो P&L बनेगा
वो हमारा इनकम किस ढंग से शो होगी, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग, जस्ट लाइक द कैश फ्लो. सो IFRS X में कुछ ऐसी चीजें अभी प्रपोज हैं. प्रोबेबली 2023 में ये नए IFRS X आएंगे, तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द करंट IFRS राइट नाउ. Now we'll talk about the GAAP, generally accepted accounting principle. GAAP चाहे इंडिया का हो, चाहे इंटरनेशनल हो, या किसी और स्पेसिफिक कंट्री का हो, गैप ही रहेगा, जिसमें ये 4 चीजें आएंगी: recognition, measurement, presentation and disclosure. Now, what do you mean by recognition? Any item, any event, when it meets the definition of asset, liability, income, expense or equity, then it will become a recognition. Suppose, okay, we'll take example later. Firstly, just go through the definition. Then it's a measurement. If I can say that this particular event, I can measure this in money for the business, yes, it is a measurement. It will meet the measurement. Okay. Presentation. Where to present? In financial statement, in P&L, in balance sheet, notes to accounts, disclosure, where? That I need to decide. And then I need to give some disclosure. Now, what do you mean by disclosure? Any information which is not on the face of financial statement, अगर हम वो provide कर रहे हैं, that is a disclosure. Come to some practical example of this gap. Suppose I purchase a plant. Now, is this plant is meeting any definition of asset, liability, income, expense, or equity? Yes. This plant is an asset. So, of course, for the business, not for my personal use. So, it is a recognition. Plant is an asset. It is a recognition. I purchase it some for money. I can measure it in a money. Okay, I purchase it for say 2,000 crore. Now, it's a measurement. Yes, it also meet the criteria of measurement. अब मैं इस प्लांट को, इस असेट को दिखाऊं कहां? बैलेंस शीट में, P&L में, कहां पे? प्लांट असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा. अब अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो कहां जाएगा? करंट एसेट या फिर नॉन करंट एसेट? Okay, I'll present it into the non-current asset. Next, disclosure. Say which method of depreciation I want to charge on it. Say straight line, WDV, whatever. I will give a disclosure on it. If I am changing in any accounting policy, anything which is not on the face of balance sheet is given here as a disclosure. So this is what a gap. I'm again saying, India ka ho, international ka ho, this works on these 4 principles, and these 4 principles are very much required for any accounting standards, for presenting the accounting standards. Okay, now we are starting with the topic of IAS1. हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी करेंगे, हम इसका थियोरेटिकल अप्रोच भी करेंगे. हम एक कंपनी की बैलेंस शीट लेके उसको एनालाइज भी करेंगे कि क्या वो IAS IFRS को अप्लाई कर भी रही है या नहीं. हम उसकी गलतियां निकालेंगे, नहीं तो एनालिसिस करेंगे. Right. Okay. Let's come to IAS1. Now, do not confuse with IAS1 and IFRS1. These two are different. IAS1, we are talking about here IAS1, that is a presentation of financial statements. Right. Now, let's come to the objective. What is the objective of this IAS1? It prescribes the basis for presentation. As we talked about this earlier. अगर सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हम उसके कंपेयर नहीं कर सकते, किसी और एंटिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, अपनी प्रीवियस पीरियड से हम कंपेयर नहीं कर सकते. इस चीज के लिए एज अ स्टेक होल्डर आई नीड सम प्रिंसिपल्स, आई नीड सम बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ये हमें वो प्रिस्क्राइब करता है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस IAS1 इज दिस, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट देता है, ये मिनिमम चीजें बताएगा, मैक्सिमम आप जो मर्जी दो. आप कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो आप दो. दिस नॉट एट ऑल एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर इट. ओके, इट गिव्स सम गाइडलाइंस फॉर द स्ट्रक्चर. ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं बता रहा कि आपको यही फॉर्मेट बनाना है, नहीं. ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा
and you need to decide that which format you will choose. Okay. Now, what is a scope? What is a scope? It presents the general purpose financial statement in accordance with IFRS. जहाँ IFRS नहीं है, of course, IAS. IAS is a part of IFRS, जहाँ IFRS उस particular चीज के लिए कुछ नहीं कहता, right? To the entities with a profit objective, fine. But IAS1, it does not apply to the structure and content of condensed interim financial statement. उसको हम IAS 34 के बाय पढ़ते हैं, जिसको हम लेटर ऑन वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्चुअली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना होता है? सी, बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, दिस. इनका कुछ पर्टिकुलर नाम भी है. बैलेंस शीट को मैं क्या बोलती हूँ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, विच इज व्हाट? अ बैलेंस शीट. बट इसको हम IFRS टाइप्स में बोलते हैं, लाइक स्टैंडर्ड नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. दिस इज नथिंग बट अ P&L, not only P&L, but it also shows some other comprehensive income, which we'll discuss in a later slides. Then statement of changes in equity, statement of cash flow, and the disclosure. Let's come to the statement of financial position. Okay. I'm discussing this through a Nokia balance sheet. Okay, let me open its balance sheet first. Okay. Let me open this balance sheet. This is my P&L, fine. Okay. So what IAS1 is saying, that you need to bifurcate your assets and liability into current and non-current. This is a required. This is not saying that you need to give in a particular format or what, but you need to bifurcate your assets and liabilities into current and non-current. Right. So here it is showing that assets, this is a non-current assets. Non-current assets क्या होते हैं? Current assets क्या होते हैं? We'll study. Liabilities, again, कुछ current होती हैं, कुछ non-current होती हैं. We'll read about this. इसके अलावा एक पॉइंट और ये बोलता है, which is very important. अगर कोई भी अमेंडमेंट किसी स्टैंडर्ड में आई हुई है, कोई भी इंटरप्रिटेशन आई हुई है, वो ये कहता है, IAS1 ये कहता है, अगर कुछ भी इंटरप्रिटेशन या अमेंडेड स्टैंडर्ड आई हुई है जो अभी तक इफेक्टिव नहीं है, से आज अनाउंस हुई है, वो कह रहे हैं कि ओके, कंपनीज में टेक इट इफेक्टिव एज ऑन 2022 फॉर द 2022 बैलेंस शीट, बट स्टिल आपको अपने में ये नोट देना पड़ेगा दैट वेदर that amendment is having any material effect on your balance sheet or not. Say this is a Nokia company, right? Nokia company's balance sheet, जिसमें उसने हमें बताया कि कुछ IFRS 3 में, like this is on January 1st 2020, ये 2020 की बैलेंस शीट है. इस टाइम पर कुछ अमेंडमेंट IFRS 3 की डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में आई थी, कुछ IFRS 7 में आया था, 9 में आया था, 39 में आया था, कुछ अलग अलग अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशंस आई थी, जिसके बारे में नोकिया क्या कहता है. लेट्स रीड. On January 1, 2020, the group adopted the following amendments to the accounting standard issued by IASB. This is our board and endorsed by the EU with no material impact on group consolidated financial statement. This we need to give disclosure. If it is giving any material impact, we need to say that what actually the material impact it is given. So this we need to disclose. This is a requirement of IAS1, right? Okay. So now come back to the slides. Here, this is said by the Bear Act. This, yes, the face of statement of financial position should include these lines. You can read this. Okay. Now, whatever the method of presentation you are adopting, you need to show your assets as current or the non-current. Now, what do you mean by the current asset?
that asset which is expected to realize or intended for a sale, consumption in a normal course of the operating cycle, or I can say operating cycle में वो realize हो जानी चाहिए, trading purpose से मैंने held की हो, 12 months के अंदर अंदर expected to realize हो, 12 months के अंदर अंदर वो मुझे realize हो जानी चाहिए, और I can say cash और cash equivalent simply, और जोन सी asset इन चारों को नहीं complete करती वो हमारी non current asset होती है. So this is our IAS1 demand. Fine. Liability. Liability is on the same pattern, what is the current and the non-current, but one point is different. Okay, let's read. Expected to settle in a normal course of operating cycle, fine. Held for trading purpose, fine. To be settled within 12 months, fine. No unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting period. This is not fine. I'll take it as an example. Suppose I have taken a loan and I need to repay after the 24 months. But anyhow, I breach some terms. Now it's payable on demand. Now where I will classify it? I will classify it as a current. Now this is again a big topic, that what is the reporting period, and somewhat IAS has having, okay, one is our IAS International Accounting Standard and one is our Ind AS. Hope everyone is aware of Ind AS. So some bit difference with the Ind AS. Ind AS इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और कहता है, वो नीचे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे, ठीक है. ओके, सो दिस इज आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. इस ढंग से हमें बनाई जाती है, नॉर्मली इस ढंग से बनाई जाती है. बैंकिंग कंपनीज इस ढंग से नहीं भी देती है, बैंकिंग अपनी लिक्विड फॉर्म में देती है, बट यस IAS1 ये जरूर कहता है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को कैपिटल और करंट और नॉन करंट में बाइफ्रिकेट करके चलो. फाइन, दिस इज अ format of this. Assets, non-current assets, intangible, PP, right of use, etc., etc. Then there's a total NCA, then about the current assets, then about the same is in a form of liability and equity. Of course, equity, what is equity? Net assets is our equity. Okay, next. Let's come to the statement of P&L and other comprehensive income. Now, this is somewhat some, technical point where I need to tell some points, right? Comprehensive income. हम बोले कि हम P&L बनाते हैं, ठीक है. Actually में IAS1 क्या कहता है? हमें पहले P&L बनाना है, फिर हमें other comprehensive income बनानी है, और फिर हमें total comprehensive income बनानी है. Let's go to some practical approach. Now this is again a Nokia balance sheet with its P&L. With its P&L, where it is. Okay, fine. See, this is a requirement of IAS1 that you need to show your P&L, your OCI, your total OCI in a format that firstly you will show that profit and loss before tax, okay, income tax expense, okay. Now you need to show the profit or loss from continuing operation, profit or loss from discontinuing operation, and then this profit, how you are attributing to the equity holders and the non-controlling interest, the owners, or you can say the majority or the minority holders, right? Then we will give some other comprehensive income, and then total of this is our total comprehensive income. Total comprehensive income, again we need to divide this TCI, total comprehensive income, into equity and non-controlling interest, or I can say minority and majority. Okay, see, profit and loss from continuing operation, profit and loss from discontinuing operation, and the profit for the year is this, attributable to this. Okay, now when I coming to the other comprehensive income, this other comprehensive income now needs to classify it into two parts.
items that will not be reclassified to P&L, items that may be reclassified subsequently to P&L. Okay, that may be subsequently to P&L, समझ में आता है, but it is saying that item that will not be reclassified to P&L, तो फिर ये कहाँ जाएगी? It will go to the retained earnings, right? आइटम दैट मे नॉट बी, सो हमें कॉम्प्रिहेंसिव, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. आइटम दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड टू P&L, आइटम दैट मे बी क्लासिफाइड टू द P&L. ओके, हम एक वीडियो में पूरी एक कंपनी की बैलेंस शीट का, एनुअल रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे. ओके, हमने P&L निकाल दिया, कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग, हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकाल दी. इसके बाद हम TCI निकालेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, विच इज नथिंग बट अ टोटल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बोथ कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. नाउ हमें शो करना है कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कैसे और कितना जाएगा. दिस इज अ P&L. अब ये सिंपल सी एक दो चीजें बोलता है. IAS1 required that all item of income and expense recognized in a period must be present either, या तो एक सिंगल स्टेटमेंट में दिखा दो या फिर टू सेपरेट स्टेटमेंट्स बना दो. एक सिंगल स्टेटमेंट में P&L और अदर कॉम्प्रिहेंसिव दिखा दो, या दो स्टेटमेंट्स बना के एक में P&L और एक में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम along with अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बता दो. फाइन. अब इन दो चीजों को P&L OCI is equal to TCI, P&L और TCI को मुझे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है. फाइन. इंड AS इसके बारे में कुछ और भी कहता है. फाइन, दैट इज फाइन. I have given some particular format. You can go through this PPT. I will share this PPT with everyone. Okay. Next is our statement of changes in equity. Let's see this. This is also interesting. Now again, Nokia's balance sheet. Okay, statement of changes in equity. Now this is a statement of changes in equity. See, usually I need to give the 2 years balance sheet, right? But in a statement of change in equity, sometimes prior period के opening की balance sheet भी मुझे देनी पड़ती है. Whenever there is a something change in our policy, we are changing some policy, maybe anything, or we are having some error in a past, so मेरे को उसमें 3 बार की बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है. तीसरी क्या होगी? प्रायर पीरियड की ओपनिंग. ओके, नाउ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमें क्या क्या बताता है? सी, शेयर कैपिटल, शेयर इश्यू प्रीमियम, ट्रेजरी शेयर, ट्रांसलेशन डिफरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन डिफरेंस? फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस को ट्रांसलेशन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं. फेयर एंड अदर रिजर्व, रिजर्व फॉर इन्वेस्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड इक्विटी, accumulated deficit attributable to equity holders of the patron, and non-controlling interest and the total equity. So this is a things basically which is directly related to the equity, which is directly related to the owners. हम उसको यहाँ पर देते हैं, statement of changes in equity, right? So you can go through this thoroughly, right? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसका अपना अलग स्टैंडर्ड है IAS 7, जो इसकी कुछ प्रेजेंटेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है, एंड एवरीवन नीड्स टू प्रिपेयर दिस. ओके, एक छोटी सी चीज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें क्या बताता है कि हमारा पैसा, हमारा कैश, विच इज इम्पॉर्टेंट थिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा बिजनेस में कहाँ, कैसे, किसमें, क्यों, कब यूज हुआ है, ये सब हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताता है. फॉर द स्टेक होल्डर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो इसी पैटर्न में देखना चाहते हैं, इसीलिए IFRS X में इनकम स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी इसी पैटर्न में दिखाए जाने का प्रपोजल चल रहा है. नेक्स्ट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आपको क्या ही बताएं, इस
इसमें आप जो मर्जी दो, जितना मर्जी दो, IAS1 बोलता है जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जो दे सकते हो सब दे दो। कुछ स्पेसिफिक की बात करें तो कंपनी की इंफॉर्मेशन जरूर देना, वो इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, उसका एड्रेस क्या है, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसकी पेरेंट क्या है, अल्टीमेट पेरेंट का नाम क्या है, बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ये जरूर लिखा होना चाहिए कि आपका बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या आपने IFRS के साथ कंप्लाई किया है, क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ कंप्लाई किया है। ओके, one point, amount of dividend proposed or declared after reporting date but before the financial were authorized for the issue. Now this is important. एक कंपनी को अपने IFRS से कंप्लाई करके अपने नोट्स टू अकाउंट्स में ये चीज देनी ही पड़ती है। इसने देखो क्या दी है नोकिया ने, द ग्रुप did not pay dividend to equity holder of the payment in 2020 bad company nahi de rahi hai। Okay, and no dividend is proposed by the board of director of the parent company relates to the financial year. That means you need to give notes to the accounts, you need to give some information about it. Okay, let's have a quick look ki what actually Nokia is giving in the notes to accounts. This is like running. Okay, इट इज गिविंग द कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में क्या बता रहा होगा, अपना नाम, पेरेंट का नाम, क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, एवरीथिंग, कहाँ पे लिस्टेड है, क्या है, कौन सी डेट को आया, एवरीथिंग। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी पे क्या काम करता है, इसके अलावा ये अपने सारे प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन बता रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन बता रहा है, क्या ये एक्विजिशन किसी को कर सकता है, किसी को किया हुआ है, एवरीथिंग ये बता रहा है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बता रहा है और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर बता रहा है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बता रहा है। मींस एवरीथिंग व्हिच यू कैन टेल, व्हिच यू वांट टू टेल, जो आप अपने स्टेक होल्डर्स को बताना चाहते हो। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा है, एज आई टोल्ड यू कि फॉरेन एक्सचेंज से आप में क्या प्लस माइनस हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज में काफी इंपैक्ट पड़ता है। एसेट्स लाइबिलिटीज में नहीं, बेसिकली अगर मुझे किसी को $10 देने हैं, ठीक है, एंड आई एम इन इंडिया, मतलब INR इज माई करेंसी इज INR, डॉलर और INR के फ्लक्चुएशन से मेरी फ्लक्चुएशंस एसेट लाइबिलिटीज की एनी हाउ कैसे बढ़ घट जाती है, क्योंकि मुझे पैसा आगे कम पे करना है या मुझे आगे पैसा कम मिलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेल कि एक्सचेंज डिफरेंस से कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी, इसके ऊपर अपने आप पूरा एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हम लेटर ऑन जरूर पढ़ेंगे। एंड गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स दिया, मतलब एवरीथिंग विच यू कैन टेल इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, सो IAS1 के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, वेरी ऑब्वियस दिस, fair presentation and compliance with IFRS. Okay, going concern, I hope everyone is aware that we are assuming that our organization, our company will go forever. It is not going to be liquidate in very short time. So this is our going concern. Accrual basis of accounting, we are doing it on an accrued basis only. Consistency, materiality and aggregation, offsetting, comparating information and frequency of reporting. This is what are key principles. Okay, इसके अलावा इस PPT में I have given some differences in IAS and IGAP, right? So you can go through it. I will definitely circulate this PPT as well. And we will also, again, I'm saying that we will also do some analysis on some listed company, surely in some next videos. Okay. Thank you very much.